So today we'll be discussing about majorly about microservices, and this is an addition to what we discussed in the previous session. We discussed about GraphQL for those who did not attend, and this is we'll discuss at the end like how GraphQL plays an important role in microservices architecture. Okay. So before starting to understand why like developers are using microservice architecture and things like that, we should understand the story behind how software products evolve over time. So like most of us know how Facebook has evolved. It started in a college, okay, and then it spread over the country, and then gradually it went to global, okay. So when products are evolving from uh, from like small to big and giant stages, so software should also upgrade to cater to their needs. Okay, so generally the software product architectures will so maybe like Mark Zuckerberg must have written the first piece of code in a monolithic fashion. He must have written the entire code in one file, and eventually he must have added like more files to it, and then maybe he has written it in a like a framework based manner, and then so, so until that point, so he must be the like only guy who is working on that, and then eventually he must have onboarded few developers to work on, and then he must have identified that some of the services would need different treatment in terms of development, in terms of deployment, and things like that. And he has to allocate few tasks to some more team members. And then so like at that stage when you have a team of developers and you have large user base to cater to, though they must have used microservice based architectures. And then once they expanded like to the or like to all states in America and then like the neighboring countries, so they after that point they must have move to a distributed system architecture. Okay, so we like while we are trying to understand how software are evolving and like what kind of architectures we need to use in our systems, we need to understand the story behind it. So why we are doing it, like so in distributed system architectures, like most of you must have known that in Indian fintech companies, there is a regulation called the like Indian government says that the data should stay in within the premises of this country. So the all the servers, like all the AWS servers that are deployed by all Indian fintech companies would be deployed inside the country itself. So if you are selecting AWS, you must be selecting Mumbai's AWS like servers. Okay. So like that's the story. So I'll explain like more in detail. So why we have to like think in the terms of how products are evolving like that. So and other than that, we need to understand why we need to move to a certain architectures. So these are the like main objectives in software development usually. So we want to maximize our software delivery velocity. We want to like ship things faster. Okay. And along with that, we should be able to maintain our code and services and av- availability like over long in the long run. And also the third thing is extensibility. So we should be able to add new capabilities. Let's say we have launched a certain feature, and when we are adding the feature number 2, so the system should be able to like accept it. Like we should be able to like easily add new features. We should be able to easily develop, deploy, and launch all the new features easily. And also the at the same time testing is one important component of the software development. So the testability should also be the like is also a main concern during the software development. To cater to all these problems,
And also, the you must be able to like understand these usual suspects in the normal monolithic architecture. So when you have written the entire code in one particular application only, like one microservice itself, so the one general problem people face is they won't be able to upgrade to a new tech stack at any point of time in life, because they'll have to rewrite everything, and only then they'll be able to switch to a new tech task. And other thing is, whenever you are onboarding a new developer, you have to, in order to assign a task to him, you have to uh, guys, like whenever I'm not understandable, just stop me, raise your hand, and ask me. Okay, so I'm just like talking continuously. Okay, am I audible? Yes, Rajesh? Yes, sir. Yes. yes, Yeah, you yeah, raise your hands and ask me in between. Fine. So other problems that people face in monolithic architecture, like where they don't follow frameworks and where they don't follow microservice architecture. So one problem is to, like, you will have to explain the entire system to the developer before assigning any task to him. And other than that, we have like two more problems in terms of deployment and scalability. So we won't be able to tune our deployment strategies based on a use case. If you remember, in the last talk, we discussed about serverless architecture. Okay, if you want to like employ that serverless architecture in a, monolithic application, it is doable, but we'll have to like deploy application like each time you want to do it. So if you had implemented in a like microservice architecture fashion, it would have been easier for you to like incorporate any new type of development stack or deployment stack or anything. And other thing is like scalability. So if you want to, the scalability is another problem in monolith. So that you will, so I'll discuss it in along with the microservice architecture point of view. Okay. Okay. So when you are designing, this is about like designing how to design a microservice based architecture. Before that, I'll try to mention like few benefits of microservice architecture. I'll use a diagram to explain it. So, so on the left, let's say this is a script with 4 different modules: small m1, small m2, small m3, small m4. M1 is responsible for authentication. Okay. M2 is let's say this is a banking application, HDFC banking application. Okay. M1 is responsible for M1 is a piece of code which is responsible for login, and M2 is responsible for what do we call? Okay, for the transactions maybe. Okay, and M3 is responsible for sending promotions, and M4 is responsible for creating account statements. Okay, so in all these three, amongst these 4 modules, M4 is generating account statements. This will take a lot of time and resources. Okay, so let's say at the end of the month, people want to see, well, like what are the expenses they have made over the month. So all the customers of HDFC Bank have started requesting statements. At that point, you want to scale your servers, but you in this particular setup, you end up uh, deploying like more instances of this setup. One second. So whenever you're scaling, what you will do is, so consider this square as a one computer. So one computer is holding this code. Okay, I think you are able to see my cursor. So this is one computer serving some like 100 requests per minute. Okay, now there are like more people, like 500 people are trying to make requests to the system, and to make your system available. So you have deployed like
4 more instances of this to cater to the traffic. Okay, but here the problem is all the requests that are coming to the system are for downloading account statements. Okay, now you could have, if your system was designed something like this. Okay, in this particular system, see, the M3 is for sending promotions about loans and offers. This need not be scaled at all. Okay, and M1 login, maybe people are logging in, which is equal to the amount of traffic. So then you have scaled it. So the main main module that needs to be scaled is account statement processor. So if we had divided our service into like small microservices like this, see, the account statement responsibility is deployed with more instances. Let's say like there are more account statements that need to be processed. Then we'll keep increasing the number of instances that are required here. Okay. So any questions like until this point? You want to like add something to like what I'm trying to tell? Anyone? Gaurav? Sunny? आप कुछ ऐड करना चाहो? हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर इनको मैनेज करने के लिए हम लोग अलग से सर्विस कुछ यूज करेंगे, तो तो एक चीज और इसमें ऐड होगी, ऐसे कौन कौन से जैसे डिप्लॉयमेंट करने हैं अपने मॉड्यूल कहाँ पे? डिप्लॉयमेंट करने का टूल्स की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ओके. Okay. So this is like one problem that like in monolithic applications we'll underutilize resources by deploying like more number of resources. Okay, if we had like deployed like more instances of this monolithic applications, the small M1, M2, M3 will be underutilized, and we are wasting the resources. That is one problem. And right. If we deploy the complete module, inside other child module also be deployed by default. Yes. Siddharth, Suraj, Swam, anything like you want to ask? Nikita, Neeraj. कोई फ्रेशर से तो उनको पॉइंट आउट करो. तरुण, इन द बैक ऑफ माय हेड ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऑलरेडी माइक्रो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे सनी है और भी कुछ लोगों से मैंने बात किया था. नहीं, So I'm अभी just what you already know, it doesn't help. So just tell me like in what direction should I proceed, or I should like continue with my presentation, and at the end of the presentation we can discuss the questions. ठीक. few can ask like Siddharth, Swam, Suraj. तुम लोगों ने काम नहीं किया हुआ शायद अभी माइक्रो सर्विस में. निकिता, Jaspreet. Jaspreet is on the call. Yes, Jaspreet is here. Okay. ठीक है. So in the name itself, आप microservice में जब देखोगे, so this is consider this like a service, and then this got split into this like a new setup. जैसे small m1 जो है वो अलग सर्विस की तरह. So this entire thing was on one machine. तो उसके बाद क्या हुआ, like this particular thing has been extracted and we are calling it as like a microservice m1. And जैसे अभी we tagged it for like login, right? तो जैसे अभी login request ज्यादा आ रहा है, तो we can simply
deploy like more instances of capital M1, and the traffic will be managed. तो similarly अगर account statements का अगर ज़्यादा load आ रहा है हमारे पास, फिर अपन M4 को ज़्यादा instances में deploy करवाएंगे. And like I'll talk about like other things. ठीक है, जैसे अभी continuous deployment, ठीक है, तो let's say अभी पहले एक बंदा काम कर रहा था, so like in the entire applications, now we have like 4 teams, team 1 2 3 4. Okay, so in the monolithic setup, if we have to deploy, we have to put all teams codes together, only then we'll be able to deploy. So in microservice architecture setup, so there is no interdependency. So team 1 का जब काम हो जाता है, they can directly go and deploy. So this is like one benefit in microservice architecture. So they don't need to wait for others code or like deployments. And multi-dimensional scaling is what we just discussed. Multi-dimensional matlab, देखो like this, all of these belong to the same system, but different modules are having different capacities here. So that is like multi-dimensional, like each microservice is deployed at a different dimension. इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है. And the other thing is development team autonomy. So whenever you are onboarding someone new, let's say एक नया developer को आपने M1 में डाला है, so you don't have to explain modules M2, M3 and M4 to the developers, because he will not realize other people's code anywhere in his deployment, like only unless there are some external APIs involved. So you can simply explain M1's code to that developer and onboard him, and he can continue with the development. So that is one benefit in microservice architecture. And other thing is like ability to adapt new technology. जैसे अभी M4 is responsible for generating account statements. So whenever you are dealing with data, so you have to pick a technology which has good libraries and like to handle the data, and which will process things faster. Let's say abhi, these days people use Golang for these purposes. जैसे memory efficient है and all. तो let's say अगर आप monolithic architecture के setup में रहते हो, then it is difficult to like convert your entire application from, let's say आज JavaScript में लिखा हुआ Node.js में. You have to write the entire application in Golang, only then you will be able to utilize that Golang capabilities in M4 module. In microservice architecture, so you just need to write like अभी M1, M2, M3 को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. M1 will write their code in Golang and just like go ahead. तो नए टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करने में भी उतना like easy रहेगा whenever you are doing this. And also like same thing goes with the agile methodology में भी थोड़ा काम आएगा. So agile methodology is like one software development philosophy to independently run in pods. So let's say like product manager 1 is handling M1, 2 is handling 2, 3, 3 and 4, and 4 ka 4 hai. So there also like you don't need to intervene with other teams and clearly go with agile methodology. That is one thing. And okay, ठीक है. So there is like one big problem in microservice architecture. So यहाँ पे you have small M1, M2, M3, M4. They are together in the same system. Okay. आपने क्या किया, उसको तोड़ के 4 अलग-अलग चीजों में रख दिया, right? But still like नए setup में भी this entire thing belongs to the same system. So one big problem here is communication between the items. So M4 is trying to create account statements for users, but उसको ये पता होना चाहिए ना कि किस यूजर का मैं अभी रिक्वेस्ट प्रोसेस करना है, right? So the communication is like one
big hurdle in like one big challenge in microservice architecture. So since you have split the modules into like multiple items, so you should create some good communication system between these microservices. And communication would be in two types. Jैसे, let's say like I'm requesting an account statement for like 10 days. So सबसे पहले the request will come to M1. So M1 will authorize and identify who this user is. It will say that like the user is Kishore. Now he is asking for 10 days statement. Okay. Now it has to communicate that request to M4 and then fetch it back and then render it back to the client. Okay. So if it is like 10 day statement, so they can do it immediately. So they'll do a synchronous HTTP call from M1 to M4, fetch the data and give it back. Okay. And there is a asynchronous use case also. Like let's say I've asked for 10-year statement. Okay. Now what M1 will do is M1 will asynchronously tell M4. Asynchronous systems are like Kafka and RabbitMQ. Then M1 will enqueue a message. So let me draw a queue here. Okay. Okay, consider this like a queue. Okay, so यहाँ पे so M1 will put a message in this box. And this will consume that message, process it, and then send an email to the user. यहाँ से. So the point is, whenever you are building a microservice architecture, you have to take care of the communication, and you have to build an efficient communication system. So synchronously and asynchronously. Synchronously अपने आप हो जाएगा if you are using HTTP APIs, and asynchronously you have to make sure, be it RabbitMQ, like Kafka, or like some pub subsystem, you have to make sure all the messages are being enqueued and being dequeued and being processed successfully. Okay. हेलो. यस सर. ओके. अच्छा ठीक है. आवाज नहीं आ रही थी अब तक किशोर की. Backend developers, like no one is asking any question. सबको समझ में समझ गए हो ना सब क्या है. बाकी लोग भी पूछ सकते हैं जिनको जो भी डाउट्स है. राजेश, अभी मेरा म्यूट हो गया था. मैंने किया था और किसी और ने किया था. कहाँ तक सुनाई दिया? स्क्रीन अपने स्टॉप. वो सिंक्रोनस कॉल जो बता रहे थे. ओके सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन ये शेयर और ये. रैबिट. ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिखना भी बंद हो गया ना? हाँ 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 अभी आ अभी. गया. ओके, मैं जूम वेब यूज कर रहा हूँ, मे बी वेब में इश्यूज होते हैं. ओके सॉरी. सो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ना, ठीक है. तो आई विल रिपीट. सो whenever
So फिर से monolithic and microservice architecture comparison में शुरू करूँगा. Monolithic में you have modules M1, M2, M3 and M4. Now you have split those modules into independent microservices M1, M2, M3, M4. ठीक है. Now the biggest challenge here is these services should be able to communicate between them, and communication can be would be needed in two ways, synchronously and asynchronously. Synchronous use case ये है कि I have requested for a like 1 month account statement. Okay, तो request सबसे पहले M1 के पास जाएगा, so it will identify who the person is, it will identify that Kishore has requested it, and उसके बाद it will internally talk to M4. Okay, M4 will fetch the data from the database and give it back to M1, and M1 will render the response. ये सब synchronously हुआ, मतलब at the same point of time. उसी वक्त M1 के पास request गया, M1 से M4 it fetched the data and gave it back to the customers. Okay, so this is like synchronous use case. And the second one is asynchronous. Asynchronous का use case ये है कि so I have requested a account statement for 10 years. Okay, 10 years के account statement fetch करने में काफी time लग जाएगा, maybe like a minutes and 5 minutes, 10 minutes. तो 5 minutes, 10 minutes user को wait नहीं करा सकते. So what we do is we will send this particular request to a broker. So asynchronous communication achieve करने के लिए there are system PubSub करके एक system है where you publish a message to a broker, and subscribers will subscribe to a broker, and a message can be communicated. Which means अभी M1 के पास request आया कि Kishore needs 10 years statement. So M1 will put that message in a queue like this, and M4 will keep pulling messages from there. Okay, so once that message is processed and the account statement is ready, it will deliver the message via email to the user. So this is one asynchronous use case. तो इसमें हेलो, तो ये चीज समझ में आया क्या, asynchronous use case? तो जैसे M1 रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल मॉड्यूल्स को मैनेज करने के लिए, तो सारे जो भी रिक्वेस्ट होंगे अदर मॉड्यूल्स के लिए तो वो भी मैनेज यही करेगा, मतलब एक ही माइक्रो सर्विस वो यूज होगी जो कि एक तरह से गेट टाइप का यूज होगा. इस रिप्रेजेंटेशन में वो नहीं था. So every request is coming to M1 because like यहाँ पे वैसा डिजाइन किया था, but it need not be. तो डायरेक्टली M3 के पास भी जा सकता है रिक्वेस्ट. ठीक है, M3 is for promotions. ठीक है, तो लेकिन M3 डायरेक्टली प्रमोशंस वापस रेंडर कर सकता है, और if there are that is a like general promotion जो कि किसी को भी दे सकता है. और कुछ प्रमोशंस ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए. लेट्स से आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट लेट्स से 5 लाख का है, तो आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स है. तो इसके लिए M3 हैज टू आइडेंटिफाई दैट, लाइक आइडेंटिफाई हु द यूजर है. फिर क्या करेगा, M3 विल इंटरनली आस्क M1. तो उसके पास जो कुकी रहेगा ऑथ टोकन M1 को देकर पूछेगा कि ये यूजर कौन है. If he is falling in that 5 lakh वाला bracket, so it will fetch that information. फिर वो process करेगा कि 5 lakh credit card holders के लिए क्या promotion है, and then it will give it. तो जरूरी नहीं कि सारे request M1 के पास आए. तो वो ऐसा setup है कि like it can be like setup like Nginx का setup ऐसा कुछ होगा. It's like Nginx में क्या रहेगा, सारे request आएंगे इसके पास. तो Nginx knows कि कौन सा रिक्वेस्ट किसके पास जाना चाहिए. Nginx के पास कुछ होता है, लाइक जैसे अभी हमारे URLs हैं. हाँ, तो आइडेंटिफाई करने के लिए लॉगिन एक होगा, राइट, /login होगा. तो /login Nginx को पता है ऑलरेडी कि लॉगिन कौन हैंडल करता है.
तो रिक्वेस्ट सीधा M1 के पास चला जाएगा। और लेट्स से रिक्वेस्ट आया था प्रमोशंस के लिए, स्लैश प्रमोशन के लिए आया, तो Nginx को पता है कि वो M3 हैंडल करता है, तो रिक्वेस्ट विल गो टू M3। फिर स्लैश अकाउंट स्टेटमेंट के लिए आया, ठीक है। मैं हमेशा लाइक अकाउंट स्टेटमेंट वाला M1 से M4 में जा रहा था, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। तो अकाउंट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट गया था M4 के पास, तो M4 क्या करेगा, इट विल टॉक टू M1 टू अंडरस्टैंड इफ लाइक हु द यूजर इज, टू यूजर डिटेल्स, फिर वो प्रोसेस करके ये वापस भेज देगा। तो हाँ, लाइक पहले एग्जांपल में M1 के थ्रू इसीलिए कर रहा था ताकि ये एसिंक्रोनस यूज केस एस्टेब्लिश करो। तो और कोई एग्जांपल लाइक ठीक है सही है, ठीक है। सो लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हो गए। पहले हर चीज एक ही सिस्टम में हो रहा है, लेकिन नाउ वी हैव स्प्लिट दैट इनटू लाइक मल्टीपल थिंग्स, सो बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक जैसे अभी यहाँ पे हमने M1 M2 M3 M4 करके तोड़ा, राइट। तो हाउ टू स्प्लिट अप आवर कोड इनटू मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, तो वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे करोगे और आपका फ्यूचर लाइक स्केलेबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हो, और भी पैरामीटर्स होता है, ठीक है। तो अभी ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं, सो दैट इफ एनीबडी हैज डाउट्स। So the point is we have split one module into multiple one service into multiple microservices. ठीक है. Now we have to create a network between them so that they can communicate like with each other and then support the system. ठीक है. तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कम्युनिकेशन दो तरीके के होता है। लाइक वन इज सिंक्रोनस मींस इट हैपेंस इमीडिएटली, लाइक सो रिक्वेस्ट केम टू M3 इमीडिएटली टॉक टू M1, M1 तुरंत बताया कि यूजर कौन है, फिर M3 ने प्रोसेस किया, रेंडर किया। और एसिंक्रोनस ये होता है कि द सिस्टम अंडरस्टैंड्स दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, so that is why it will take the request and tell the user that we'll deliver the message at a later point of time. तो उस टाइप के यूज केसेस के लिए we'll use asynchronous mechanisms like PubSub. So like communication is like one important part. Other thing is we discussed logging. Logging सुनाई दिया था क्या आप लोगों को पहले? लॉगिन लॉगिंग वाला, हाँ लॉग्स। हाँ। तो मैं बीच में म्यूट में चला गया था, तो आई डोंट नो, नहीं वो ये चीज ये हाँ लॉगिंग था ना, ठीक है। सो अदर थिंग इज एक कैस्केडिंग फेलियर्स का सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। कैस्केडिंग फेलियर्स ऐसा हो सकता है कि ठीक है, तो अभी एक रिक्वेस्ट आया M3 के पास टू फेच द प्रमोशंस, ठीक है। M3 विल टॉक टू M1 फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द यूजर, ठीक है। लेकिन M1 काफी बिजी था, M1 इज ठीक है। अगर ये बिजी हो गया तो इसके रिक्वेस्ट भी होल्ड पे रह जाएंगे, राइट। हाँ, तो अगर ये बिजी हो गया तो सब बिजी हो जाएंगे, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इस चीज के वजह से। तो हमारा लाइक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो ये कैस्केडिंग फेलियर्स बोलते हैं। कैस्केडिंग मतलब एक चीज के वजह से सब कुछ, ये जो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, तो एक चीज अगर गिर गया तो सब गिर जाएंगे, so that will happen. So उस चीज को अवॉइड करने के लिए तो there are certain patterns that people follow. Like one thing is circuit breaker pattern. Circuit मतलब अभी एक सर्किट बन गया ना कि सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए। अभी एक in this particular example everybody is talking to M1 to identify the user. और भी use cases हो सकते हैं। Let's say M2 is responsible for loans, ठीक है। तो अभी लेट्स से अचानक क्या कहते हैं, लाइक ठीक है, मतलब सम डिपेंडेंसी दैट M1 शुड आल्सो टॉक टू M2 बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू एनी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब पॉइंट ये है कि द एवरी सर्विस विल बिकम इंटरडिपेंडेंट
and like nothing will work, like the entire system will crash. तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या क्या बोलता है, तो ये जो सर्किट बन गया ना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी और सब लोग ऑन होल्ड पे रह गए, इट्स लाइक ए डेडलॉक, जैसे ट्रैफिक में सब लोग एक साथ आ गए तो फिर फंस जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट का एक टाइम आउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर इफ एनीवन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग लाइक विद इन लाइक, जैसे हर एक एपीआई रिक्वेस्ट का 100 मिली सेकेंड्स रहता है, राइट, बेंचमार्क एनी रिक्वेस्ट, तो लेट्स से 200 मिली सेकेंड्स। अगर 200 मिली सेकेंड्स में कोई अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें यह समझना होगा कि दैट गाय इज डाउन, लाइक यू शुड स्टॉप आस्किंग like that, like M1 for any anything, ठीक है। तो इससे पूछना बंद करना चाहिए, और and the entire system should be able to monitor that one of the microservices is not able to respond like for about 30 minutes or 40 minutes. तो हमें identify करना चाहिए that like one guy is going down and this is a critical service, if this goes down everything will go down. तो इस टाइप के चीजें हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितने एडवांटेजेस है उतने ही डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं लाइक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। ये तीन चीजों में लाइक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सो वन इज कम्युनिकेशन इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सेकंड थिंग इज लॉगिंग। सो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है क्या? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। I'll repeat like what the challenge in logging here is. So let's say I'll erase कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। So एक request आया था M1 के पास, M1 spoke to M4 and M4 spoke to M2, फिर M2 से फिर M4 पे आएगा, फिर M1 and then it will go back to the user, ठीक है। This is the life cycle of this particular request. अगर कहीं पे ब्रेक हुआ, लेट्स से वो यहाँ पे M2 पे ब्रेक हुआ, ठीक है, लेकिन एंट्री पॉइंट था हमारा M1 नाउ, और सिंस हमारे ये सर्विसेज इंडिपेंडेंट है तो लॉग्स इंडिपेंडेंट रेस्पेक्टिव माइक्रो सर्विसेज के पास होंगे। नाउ व्हेन यू आर डिबगिंग समथिंग यू शुड बी एबल टू पुट ऑल दीज लॉग्स टुगेदर। तो इसको अचीव करने के लिए लोग क्या करते हैं, हर एक एपीआई रिक्वेस्ट में ना एक रिक्वेस्ट आईडी भेजते हैं, एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी, सो दैट विल बी पास्ड ऑन टू, एक इसके पास रिक्वेस्ट आया तो वो एक रिक्वेस्ट आईडी के साथ M4 को बताएगा, फिर M4 द सेम रिक्वेस्ट आईडी विल बी प्रोपोगेटेड टू M2। तो नाउ ऑल दिस लॉग्स कैन बी पुट टुगेदर बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट आईडी एंड देन हम डिबग करके इश्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैस्केडिंग समझ में आया क्या लोगों को? तो बाकी चीजें तो हायर लेवल पे लाइक समझ में आए तो भी चलेगा, बट दीज थिंग्स आर लाइक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। इसमें और किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कैस्केडिंग वाला एक बार रिपीट कर देंगे तो अच्छा है। ओके, तो कैस्केडिंग वाला ये था, ओके हु इज दिस, कौन था? हेलो सर सूरज। ओके ठीक है सूरज, ठीक है। तो कैस्केडिंग में ये था कि अभी M3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। M1 is responsible for login, M2 is for something, M3 is for promotions and M4 is for statements. स्टेटमेंट है। अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आया M3 के पास फॉर ऑफर्स, ठीक है। ऑफर्स के लिए M3 के पास रिक्वेस्ट आया, तो M3 क्या करता है, M3 उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए M1 से पूछता है कि ये यूजर कौन है, so that it can give more relevant offers to the user, ठीक है। तो एंड अगर M1 ने डेटा दे दिया तो देन इट विल फेच द रिलेवेंट ऑफर्स टू दैट यूजर एंड गिव इट बैक टू द यूजर, ठीक है। सूरज यहाँ तक समझ में आया कि ये वर्कफ्लो में क्या है, लाइक ऑफर्स, M1 इज गिविंग द ऑफर एंड ऑफर्स देने के लिए इट इज टॉकिंग टू M1 टू आइडेंटिफाई द यूजर
एंड वो कौन सा लाइक वो क्रेडिट कार्ड होल्डर है कि नहीं है, उसके पास लोन्स है कि नहीं है, और उसका बैंक बैलेंस कितना है, वो प्रीफर्ड कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, उसके बेसिस पे ये ऑफर्स दे रहा था, ठीक है। सो दिस इज द वर्क फ्लो। और इस वर्क फ्लो में लेट्स से M1 इज वेरी बिजी, तो वो काफी रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हैं, एंड M3 ने जब M1 से पूछा था कि ये यूजर का लाइक डिटेल्स दे दो, और ये 2-3 मिनट तक दे ही नहीं रहा था। सो इट केप्ट ऑन, और इस टाइप के रिक्वेस्ट M3 काफी सारे कर रहे, लाइक इट हैज मेड लाइक 1000 रिक्वेस्ट एंड ऑल 1000 रिक्वेस्ट आर ऑन होल्ड, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसके वजह से और सिमिलरली और भी हो रहा था। जैसे अगर इफ मोर रिक्वेस्ट आर ऑन होल्ड ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम, तो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। सो व्हेन लाइक रिक्वेस्ट आर गोइंग आउट ऑफ मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, व्हेन एवर पर्टिकुलर प्रोसेस इज लाइक यूटिलाइजिंग मोर मेमोरी, बिना बताए उसको किल कर देता है। सो इट विल लीड टू ए क्रैश। तो M3 क्रैश हो जाएगा, और रेस्पॉन्सिबल कौन था, M1, ठीक है। तो सिमिलरली और भी इसको भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि M1 इज नॉट रेस्पॉन्डिंग बिकॉज M2 इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू इट। तो ये हो सकता है कि व्हेन M3 इज आस्किंग समथिंग टू M1, M1 मस्ट बी आस्किंग इंटरनली टू M2 फॉर समथिंग। और ये भी हो सकता है कि ये है, फिर धीरे धीरे ये क्रैश हो जाएगा, और ये से इंटर डिपेंडेंसी की वजह से ना, तो सब लोग लाइक सब कुछ क्रैश होने लगे, एंटायर सिस्टम विल बी अनअवेलेबल, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तो कुछ पैटर्न्स है, लाइक दिस इज वन पैटर्न दैट मोस्ट पीपल यूज, सर्किट ब्रेकर। तो अभी यहाँ पे एक सर्किट बन गया ना, तो और हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। ये जो सर्किट है, देखो यहाँ पे M3 पहला रिक्वेस्ट M1 ने होल्ड करके रख दिया, और इट केप्ट ऑन आस्किंग मोर, एंड 1000 रिक्वेस्ट तक इसने रियलाइज किया ही नहीं है कि M1 बिजी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हाँ। तो मतलब इट कुड हैव अवॉइडेड, राइट, कि लेट्स से 10 रिक्वेस्ट पूछने के बाद अगर लाइक रिस्पॉन्ड नहीं तो कर रहा है तो नहीं हाँ, करनी। तो लेकिन हाँ, इट कुड हैव स्टॉप्ड। तो इस टाइप की चीजें अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इफ अ रिक्वेस्ट इज टेकिंग मोर देन 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है, तो उससे बात करना बंद कर दो, ठीक है। तो तब क्या करोगे तुम, तो यू कैन टेल द यूजर दैट सर सिस्टम इज अनअवेलेबल, ठीक है। तो यू शुड नॉट लाइक यू कैन कम बैक आफ्टर 30 मिनट्स, और ऐसा लेट्स से ऐसा सोचो कि केस M1 का नहीं है, M4 का है। M4 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आया M1 के पास, M1 इज टॉकिंग टू M4, ओके, और M1 रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो वो एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट्स सिस्टम इज अंडर मेंटेनेंस, तो आप बाद में आओ, ठीक है। तो ये हाँ, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यू शुड बी एबल टू, सिंस यू हैव split your system into like multiple portions, first thing is you should be able to establish good communication, and also you should establish a like good I mean an analytical system, like कि कहाँ पे issues आ रहे हैं, क्यों issues आ रहा है। अगर कहीं पे issues है तो the system should be like fault tolerant। तो अगर कुछ भी, अगर ये सर्किट बन गया तो इसको ब्रेक करने का कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। अगर 10 रिक्वेस्ट तक यू शुड अलाउ, कि हो सकता है कि जेन्युइनली वो बिजी है, ठीक है। और उसके बाद अगर 1000 रिक्वेस्ट तक कर रहे हैं तो यू शुड लाइक फाइंड अनदर स्ट्रेटजी टू हैंडल योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो या ठीक है सूरज, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir, yes, Like, sir. but wouldn't but don't you need like good caching policies for good communication and to prevent this stuff from happening? Okay, caching policies to prevent like this thing from happening. So like I think caching is a like service level thing or a Nginx level thing. I'm not able to relate it to this circuit formation thing. So like, can you rephrase your question? Maybe I'm not able to relate to this. Like for instance, if there's like 1,000 requests which are like going to like from one service to another, and like
the other service is unavailable, then can't Yeah. you just like cache it locally or hold it locally? Like we do this sometime else, Yeah. and after So like 2 minutes or so, we can do that. correct. So what like I think what you are suggesting is so in the cases like M4, you know that all the users will ask for account statements at the end of the month. So we can maybe prepare these statements beforehand and keep them ready so that any request that is coming to the M1, M4 will be served immediately. So that is one thing. And also, so everybody is talking to M1, right, to fetch the user details, right? So what M1 usually do is you are giving it a token or a user ID, right? So it is fetching that user ID, ID's details from a database. And IO calls are expensive, and that maybe that is why it is taking more time. Like Siddharth recommended, so instead of like saving users' details in a database, we can put it in cache. So if you put user details in cache, maybe M1 will be able to respond in like under like 10 milliseconds. It would not take 100 milliseconds or 200 milliseconds. It would respond immediately. So M1 will never end up in a unresponsive state. Siddharth, like, did I add anything Yes, to yes, your yes, correct, right? yes, Yeah, yes. cool. Yeah. Cool. So I lost track of what the slides were. Okay. So now we'll discuss how to split the service or like your product into multiple microservices. So what are the guidelines that you should follow to split your system into multiple modules? जैसे आपने इसको you have cut this into different pieces and you are like dealing with these pieces like in different fashions. Yeah. So I have picked this thing from like one of the blogs. He mentioned that these are the 6 things that they follow like in their company. So I found them very relevant. So I'll be talking based on that only. So one is like interface segregation. So the interface segregation means, so what kind of requests that your clients would make to your service. Okay. So in this example, so you know that clients will ask for offers. Okay. So you could put all offers related code or things into one service. Interface segregation. Okay. And you know that all your customers will ask for account statements the beginning of the month or end of financial year. So account statements is one thing, one thing like users will ask. So you are separating modules based on like how these things are happening. So these And module has separate databases also. Okay. yes. So that is another thing. Sunny, आप हो गया? हाँ ठीक है. So ठीक है. I'll create one more. Same आता है क्या? Okay, sorry. Okay. So what Sunny is saying is, when you are splitting the modules into like M1, M2, M3, there are multiple components in your application. You have code. Okay. You have caching layers.
Mm-hmm. You have databases. Okay. So now Sunny's question is, should we maintain a single database for all these microservices, or each all microservices single database, or each microservice should have its own database? So this is a debatable thing. So, but most people follow having their own database because they want to like abstract their capabilities so that they can they don't have. So the idea of splitting this into these things is to not have dependency, right? Dependency with others in terms of development or deployment or scalability. So initially when you had in monolithic, so you must be maintaining each module's data in separate databases in the same database server. Okay. But when you split it into microservices, it's better to have like separate databases so that you can scale your systems independently. Okay. Let's say M4 को आपको like और scale करना है, तो like you'll keep spawning more. So whenever you are serving account statements, you have to make an entry in your system, right? So that I have sent a 1 year account statement to Kishore on this date. So you'll be making more entries. So that should not be a headache for other services. So any like item of like, so be it a caching system or database or anything else, that should be like independent so that you have like complete freedom on like how to scale and all. Okay. So that is one thing. And deployability is one factor you should consider whenever you are separating your service into microservices. So जैसे M4 का we have deployed about like 6 instances here. Okay. So this is one thing. Okay. And event driven. So event driven में ऐसा है कि so in asynchronous communication, so let's say user's name has been updated. Okay. So M1 is responsible for updating names and all. So whenever name from Kishore to Kishore Kumar in all the account statements. Okay. Here what's happening? Pencil काम नहीं कर रहे pencil. Okay. Okay. So M1 needs to inform that a user's name has been changed. Now it has to inform M4. Okay. Now it has to inform to M2. So like even is communication maybe you have to design it such that you are making minimum number of communications or things like that. So this is another important thing that all microservices systems will use. So that is one factor you should consider while you are designing microservices. And availability over consistency. Okay. So consistency का कोई सनी कोई consistency वाला example दे सकता है कोई? Okay, fine. So consistency is this. See, so I'll consider the same example. A particular user 23, his name is changed from Kishore to Kishore Kumar. Okay. Now this information will be passed on to each microservice. Okay. ठीक है. तो यहाँ पे we would have like two situations here. Either you have to block the entire system until this change is updated in all the microservices. Right. So you are taking this decision so that every piece of your system is consistent with this information. Okay. So which is bad, right? So you might take a lot of time to do this, and to update all the modules. You have make your system like you have froze your system, and none of your customers are able to access your system. Okay. So because here availability is at stake.
You are trying to give Yes. a consistent information, but here availability is at stake. But the better way would be to make the system available. Whenever someone is asking for information, give it. Okay, give it back that with the name Kishore. And at later point of time, when you identified that Kishore's name has been updated to Kishore Kumar, make a new request, send a new email saying that his name has been updated from this to this. Okay, make your system smart and make it always available. So it might look like your system is down or it's not reliable. So that is why availability is the main. Like you should always keep your systems available, and you can make some trade-off over consistency, because you are communicating, you are eventually become consistent. You are becoming eventually consistent. So over time, you are telling your other services that change has come, and update your records. So maybe after 5 minutes, the entire system knows that Kishore has been updated to Kishore Kumar. Okay. And loose coupling. Loose coupling is this. So it talks about interdependency only. So you should not be like totally like over dependent on a particular service. So you should be able to serve your requests independently. Okay. इसका example क्या हो सकता है? So okay. So let's say you have split your microservices like something like this. One second, I'm erasing things. Okay. You have put names in this microservice. Okay. And you have put email in this service, and you have put phone in this service. Okay. Whenever M3 wants user details, okay, now it has to talk to like this one and this one and this one. So like in order to process one request, it is, so now it's no longer independent, right? This request is considering everybody to involve in everything. Then we cannot call this like a better system. We are again doing what we were doing in monolithic architecture only. So you have to make it loosely coupled. So like at a higher level, so even if you forget everything about like what we discussed today, whenever you are splitting your system into small microservices, try to make them independent. Independent is one thing, and establish a communication system, a good communication. These are the two things. First goal is like try to make them independent, and second thing is establish a good communication. And again, in this independence only, you should avoid the cascading failures. One service should not kill all the services and bring the system down. That should not happen. Okay, that is one thing. And single responsibility, it's very much related to the first point only. Okay, so one thing should be responsible for one thing only. Okay, if you are putting two responsibilities in one thing, going forward after some point, you will so you won't be able to split this into like two. Splitting this into two will be different, and scaling this again like this has become a mini monolith, right? That's why you should like from product point of view also, you should always put one responsibility into one microservice. Yeah. Okay. So now so now let's assume that we have converted the monolithic form of system into a microservice architecture system. Okay. So if you remember the like initial story of Facebook, so whenever it is expanding globally, what they do is they will duplicate these systems. So they just don't increase more number of M4s. They'll replicate this entire system into.
So call this entire thing as S1. Mhm. Okay. So then they will do like more S1s like that. So distributed system will be a it is a next layer to this microservice system. Okay, so this Yes. entire system will be deployed in India. This entire system will be deployed in London and things like that. Okay, and all these things will be interconnected again. So if let's say Rajesh has post something, so a person from London should be able to post a comment, and See that. someone from Mumbai should also be able to make a comment, right? So distributed systems, like maybe we can discuss it sometime later. But yeah, it's a like next step to microservice. Microservice. So so again, like even so some of our products need not be in microservice architecture also. It can still work wonderfully in monolith based architecture itself. Based on the use case and your requirements, you should choose your architecture style and proceed with that. And our fourth point मैंने लिखा था, that is federated GraphQL. So if you guys remember last session, GraphQL will have a single API endpoint, right? Right. So it'll split that into a send the like individual small requests into individual microservice, the modules and all. Now we can have a GraphQL like setup at a system layer. Okay. So consider a federated GraphQL like a central government of GraphQL. Consider these are states, GraphQL 2 and GraphQL 2, GraphQL 3, like this. Okay, so you have GraphQL 1 at each microservice. Okay, and you can have a federated, it's like a central government, one FGQL at a system level. So this request that is coming to the system will be split into individual GQL1, GQL2, GQL3, and these GQLs internally will split them into respective module level requests and then serve it to the customer. Okay. Cool. थोड़ा अभी सब QA types कर लेते हैं. So I was switching between Hindi and English. So anyway, like I'm not good in Hindi, but if people are unable to understand, I think Siddharth, do you understand Hindi? Siddharth? Yes. Okay, Yes. cool. Fine. Okay, anybody wants to ask anything? Amir? Yeah, Hello? hi Kishore. Yeah, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? नहीं, no such. ठीक है. प्रखर, रोशन, कोई डाउट अभी कुछ पूछना है? सनी, आपके अलावा और कौन डिजाइन करता है यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज? आदित्य हैं. He is in the call? No, I think he's not. आदित्य, I think Okay. Harshit is also doing, and I think he also not available. Okay. जसप्रीत है क्या अभी? नहीं जसप्रीत left. नहीं, शायद हाँ कुछ अर्जेंट आया था तो शायद मतलब. ओके. और कौन फ्रेशर्स बोले थे आपने? और बाकी लोग भी हैं, मतलब इन्होंने एक आर्टिकल है which I found it like the best to understand microservices. I'll ping it here. I think मैंने सनी को पिंग किया था. सनी कहाँ है?
Yes, I have. हाँ, वो एक बार चैनल पे या फिर आज के जो अनाउंसमेंट था उसके कमेंट में डाल दीजिए, या तो मैं ही डाल दूंगा। I'll paste it. कहाँ था वो? In the channel Teams section. टीम्स पे Teams में जनरल पे नहीं, डेवलपर्स डेवलपर्स में। Will be in the developers. No, यही back end and front end. हाँ यही हाँ यही है ना? हाँ तो ये एक बार गो थ्रू कर लो आई थिंक। तो अगर सब कुछ भूल भी गए तो वन थिंग इज we should try to make them independent and establish good communication system. When we are making them independent, जैसे सनी ने उठाया तो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि डेटाबेस भी अलग रखना है और ये की रख सकते हैं, तो all these things. तो and राजेश एक चीज, तो everybody will get involved in the entire life cycle of software development, like the development फिर deployment में भी, फिर production logs monitoring. नहीं ऑलमोस्ट सारे लोग तो नहीं रहते हैं बट फ्यू आर देयर एंड कुछ लोग होते हैं मोर देन वन में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके ऑलमोस्ट कंप्लीट हाँ सॉफ्टवेयर साइकिल में तो नहीं रहते हैं सारे। ओके Depends मतलब थोड़ा upon capability and नहीं जैसे कैपेबिलिटी जैसे नहीं है, सीनियरिटी, हाँ जैसे जैसे वो रहता है नहीं वो कुछ लोग तो कैपेबिलिटी वर्ड है नहीं, हाँ कैपेबिलिटी सॉरी सॉरी तो जैसे कि अभी फ्रेशर हैं तो उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ तो जैसे लेकिन जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस है उनका उस हिसाब से वो कर। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि अगर जैसे हर चीज पता चलता है ना तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है तो वो इम्प्रूव हो जाता है धीरे धीरे, तो दे विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस, डेवलपमेंट डिसीजंस, एंड तो अच्छे से समझ में आता है, तो ओनरशिप वाला फील भी आता है, लाइक व्हेन यू नो दैट दैट यू आर डेवलप्ड, तो इफ इट इज ब्रेकिंग और वर्किंग वेरी वेल ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लॉग्स का एक्सेस दे सकते हो, लाइक मॉडरेटेड मे बी, तो ठीक है। मैं और कुछ, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग, और एनी सजेशंस फॉर लाइक नेक्स्ट वीक, एनीबॉडी वांट्स टू लाइक डिस्कस एनीथिंग स्पेसिफिक? Before sessions, Kishore, I would like to say like has been a wonderful session. I mean, it did remind me of my college days when I was forced to attend sessions. Luckily, currently I'm not. And those days were the days when you sit for 2 minutes just for a t-shirt and sleep for the next 1.5 hours. But luckily today I learned a lot of things. And if I have to relate it from any practical examples, then I think if we take any Ola or Uber example, so they have a big and everything integrated at once. That's what we think. But after going through this session, I think they have separated everything, like user management. Customers management will be different. Drivers management will be different. And billing and everything will be different based on different architecture system. And that's what I think we were discussing about, like microservices. So high scalability is one website where मतलब ये कुछ सीखने के लिए मत पढ़ो, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जैसे लगेंगे हमें आपको, व्हाई दे highscalability.com, इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगे, हाउ दे मूव्ड फ्रॉम वन आर्किटेक्चर टू अनदर न्यू आर्किटेक्चर एंड ऑल, सो दिस इज अनदर वेबसाइट, तो आपके इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगे यहाँ पे अभिषेक। Yes. My stories make the learning interesting. Yeah. So for all the technical teams, if you have not understood or you still have some doubts, you can ask it, or you can suggest any next session that you want to have next week. So same thread पे you can ping or you can message me directly Microsoft Teams. Yes. राजेश, आप कंक्लूड करना चाहोगे? आई थिंक और किसी को कुछ पूछना है क्या? अदरवाइज वी विल कंक्लूड। एनीथिंग?
रोशन It's प्रखर आप like लोग in future, everyone will be using microservices. Yeah. So actually, I keep talking to my like friends who work in Google and all. So वहाँ पे एक छोटा सा फीचर भी एक माइक्रो सर्विस की तरह बनाते हैं लोग. Correct. Even a small feature, let's say like का है, comment का है, everything is built in as a microservice. मतलब So I उसमें think this problems भी होते हैं. AWS microservices was built just because they wanted to scale their Amazon business. Yeah, correct. And now everybody, I mean, most of the people in the world are using microservices. Yeah. हेलो. Hi. हाय सर. सर एक क्वेश्चन था कि हर Yeah. एक छोटी सी चीज के लिए अगर माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं तो ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा सर्वर वगैरह की? हाँ, तो देखो हमारे सिस्टम जैसे लाइक यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा, बट फॉर कंपनीज लाइक गूगल, सो दे वांट टू, उनका ऐसा है कि they want to like plug and play in any of the systems. That's why they build it like so they don't care about cost, and they manage their cost in like in different departments. ओके. तो उसको जितना प्रोसेसिंग चाहिए, जितना मेमोरी चाहिए, उतना ही देंगे वो लोग. बट लाइक हम लोग नहीं कर पाएंगे राइट वैसा. हम लाइक वी ऑलवेज गो टू द AWS, और वहां पे हमेशा 4 GB और 8 GB और 16 और 32 उतना ही मिलेगा हमें. तो यू कैनॉट क्रिएट लाइक 17 GB, सिंस यू नो द लाइक दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग यू वुड हैव. सो पीपल लाइक देम डू इट. तो आपका पॉइंट सही है कि हर चीज का करेंगे तो लाइक कॉस्ट का इशू होगा. ओके. Okay, then I think basic understanding almost सबको हो गया है. Almost everyone has understood what microservices. And इसका करने का पर्पस यही था कि ऑलमोस्ट अभी जो लास्ट 2-3 मंथ से जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, लाइक Okay. थोड़े बड़े क्लाइंट है, सो दे वांट बैकएंड डेवलपर ऐसे होने चाहिए या फुल स्टैक जो Okay. हो, उन्हें माइक्रो सर्विस का नॉलेज हो. तो ये मेन पर्पस था ये माइक्रो सर्विस पे कराने का. एंड ऑलमोस्ट Okay. मुझे लगता है जो डेवलपर्स है उन्हें समझ में आ गया होगा. और इनकेस अभी भी कोई डाउट होगा तो उस केस में आप पिंग कर सकते हैं डायरेक्टली किसी और को, अगर कुछ Okay. और पूछना है माइक्रो सर्विस में क्या इश्यूज है. एंड आई थिंक सेशन तो काफ़ी सही था. मतलब मुझे भी ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी आइडिया हो गया है क्या एंड Okay. दैट आई हैव. सो आई थिंक एंड अदर देन दैट जो नेक्स्ट सेशन में क्या हो सकता है, तो रोशन जो फ्रंट एंड वाले भी है उन्हें भी कुछ पूछना है, जहाँ पर काफ़ी जगह होता है जहाँ दोनों की इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक बोथ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर नीड टू नो दैट. सो Okay. दे आर ऑल, या कुछ फ्रंट एंड हो तो वो भी टॉपिक आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट जो सीनियर्स हैं रोशन प्रखर. सो थोड़ा आप लोग भी देखो, आप कमेंट करते रहो तो कि सो दैट इन नेक्स्ट वीक वी कैन हैव सेशन ऑन दोज टॉपिक्स, एटलीस्ट फ्रॉम वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम देम. Okay. Okay, otherwise like session I think almost everyone has understood. And Yeah. 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 So Thank you yeah, guys. then तो माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर इज वाइडली यूज्ड. अगर किसी को लाइक इनिशियल स्टेजेस में है जो मतलब माइक्रोसर्विसेज के बारे में सीख रहे हैं, तो और थोड़ा रिसर्च करो, या तो लाइक मतलब ऑफिस के बाहर भी एक छोटे छोटे 2 एप्लीकेशंस बनाओ और दोनों का डिपेंडेंसी कनेक्ट एस्टेब्लिश करके एक कम्युनिकेशन चैनल बनाओ, एंड देन ट्राई टू लाइक एक्सपेरिमेंट दिस. एक वीकेंड में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन सकता है, तो बना के देख लो. ठीक है, दैट वुड लाइक उसके बाद मे बी क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, देन यू कैन आस्क मी. कोई अगर जैसे एग्जांपल कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. हाँ, क्लियर हो जाएंगे. एक सिस्टम अपने कंप्यूटर में 2 सर्विसेज चालू करो, एक 2 अलग अलग पोर्ट में, और उन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन चैनल रखो और एसिंक्रोनस भी रख के फिर देखो कि चीजें कैसे चल रही है. ठीक है, एंड लाइक आई थिंक यू शुड गो थ्रू दोस 2 लिंक्स आई हैव पिंग्ड, so they are like interesting articles. हेलो. Yeah. सर सिंक्रोनस में मेरे को क्लैरिफाई करना था कि सिंक्रोनस में सिर्फ एपीआई कॉल्स होती हैं क्या बैकएंड से, हाँ, yes. और असिंक्रोनस में वो रैबिट एमक्यू वाला पार्ट आ जाता है? Yes. ठीक है. ओके. अभी भी APIs में कुछ भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, HTTP और भी है. मतलब पुराने
RPC and all. हाँ. Okay, then I think और किसी को कुछ पूछना है क्या? Anything from anyone? Hi, sir. Hi, Manshu. Hi, Kishore. Basically, I just want to know about next session. It will be like from scratch, like new things, or it will be continuation of this session? I don't think it will be a continuation of this. So you can suggest any topic that you would want to understand. Scratch से ही होगा We'll do one thing, like if anybody else wants to suggest topics, so they can comment in that section itself, in the thread itself. Himanshu, if you think like you want me to cover like certain things in on top of this microservices topic, so we can do that. If you have any Okay. recommendations on top of this that microservices may, or to I'm not like a tech savvy guy. I'm from sales team, so basically I just want to go through like in rough way of the Okay. microservices or whatever you are describing. Okay. He just needed an Maybe we can discuss microservices deployment, the Kubernetes and Docker and all. Docker and Kubernetes का कर सकते हैं, but it will ठीक है कर सकते हैं. We can do that, but उतना relevant नहीं होगा. It won't be useful for most of us. लेकिन कर सकते. It can be in like a second additional topic, but main topic वो नहीं रख पाएंगे. ठीक है ये देख लेंगे नेक्स्ट सेशन कैसा रहेगा. Okay, ठीक है राजेश. ठीक है. Okay, then I think most of people have asked, so we can then end the session. ठीक है. Hello, thank you so much, guys. Yeah, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, Kishore. Thank you. Bye. Thanks, Kishore. Thanks, everyone. Bye. Thank you, sir. Bye. Yeah, thank you.